Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In yesterday's class, I was explained up to the mole fraction. Today I am going to explain about the what is evaporation, what is lowering of the vapor pressure, and what is Raoult's law, and some problems under Raoult's law. So see here, after molarity, molality, mole fraction in the chapter solutions, another important question is there, that is the define Raoult's law and problems which are related to the Raoult's law. This is another important question in this. So before going to the Raoult's law definition, I will explain you what is evaporation. Evaporation. Yes, evaporation is nothing but the conversion of the liquid molecules to their vapors. If we are heating the water, kinetic energy of this liquid molecules increases. From the surface of this liquid, some molecules are get converted into their vapors. So this is the process of the conversion of the liquid molecules to their vapors is called as evaporation. So after this, what is the condensation? You have to know. In the closed container, as the evaporation process increases, after some time condensation is also begins. Condensation means conversion of the vapor molecules again into the liquids is called as condensation. Okay, at the equilibrium, that means evaporation भी बराबर हो रहा और कंडेंसेशन भी बराबर हो रहा, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम बोलते हैं. Equilibrium के पास, that means where the evaporation rate is equal to the condensation rate, that is called as the equilibrium. At this equilibrium, the pressure exerted by the vapors on the surface of its liquid, pressure exerted by the gas on the surface of its liquid is called as its vapor pressure, that is written with the Vp. Vapor pressure बोल के बुलाते. इक्विलिब्रियम के पास जो वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये जो वेपर्स है इसके लिक्विड के सरफेस पे कितना प्रेशर प्रोड्यूस करते, that is called as vapor pressure. This is the definition of the vapor pressure. Now then after that, whenever the solute is added to this water or solvent, इसमें पानी में थोड़ा नमक मिला दिया या कौन सा भी शुगर वगैरह मिला दिया, तो क्या होता है, एवापोरेशन डिक्रीज होता. एवापोरेशन डिक्रीज हुआ तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होती, दैट इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर इज कॉल्ड एज द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर. उसको LVP से लिखते, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर. यू नो दैट ऑलवेज वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, that is P0 से लिखते, vapor pressure of the solution it is less than that of the pure solvent. P0 minus PS को क्या बोल के बुलाते अपन, LVP, lowering of the vapor pressure बोल के बुलाते. Whenever the solute is added to the solvent, its vapor pressure is decreases, it is called as a lowering of the vapor pressure. Now next, another definition, what is RLVP, a relative lowering of the vapor pressure. RLVP is nothing but the, see here I am taking the ratio of the lowering of vapor pressure. This is the lowering of the vapor pressure, P0 minus PS, and again I am dividing this with the vapor pressure of pure solvent. This is the ratio between lowering of the vapor pressure and vapor pressure of the pure solvent. What is RLVP? A relative lowering of vapor pressure. That is nothing but the ratio between lowering of the vapor pressure and vapor pressure of the pure solvent is called as relative lowering of the vapor pressure. Now then, by doing the number of experiments, scientists Raoult's find that the relationship between the RLVP to the mole fraction of the solute. Okay, see that what is the relationship. This is the relationship according to the Raoult's law. RLVP, relative lowering of the vapor pressure of a dilute solution
which contain non-volatile, that is the stable solute. Stable solute or dilute solution को applicable है Raoult's law. So once again I am repeating this definition: relative lowering of vapor pressure of which solution, of a dilute solution which contains non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute present in that solution. So this is the definition called as the Raoult's law. Raoult's law is a relative lowering of vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute present in that solution is called as Raoult's law. Now for the derivation of this Raoult's law, I am writing what is the P naught minus, what is the RLVP? RLVP is this one, P naught minus PS by P naught. This is the RLVP. This is equal to what? A mole fraction of the solute. Mole fraction of the solute can be written like this: NS by NS plus N naught. This is about the equation, Raoult's law equation. And you know that it is applicable for the very dilute solution. Therefore, we can neglect this NS value in the denominator. NS value is very less when compared with the N naught. Therefore, we can neglect this NS value in the denominator. Then what is that formula? P naught minus PS by P naught is equal to NS by N naught. We are neglecting this because it is applicable for the very dilute solution and the NS value is very much less than that of the N naught. Therefore, we are neglecting this NS value in the denominator. Then what is the final equation? What is the equation? P naught minus PS by P naught is equal to NS by N naught. Now then after this, you see that I am writing once again P naught minus PS by P naught is equal to NS by N naught. Mole number of solute. This is the mole number of solvents. Number of moles of solute by number of moles of solvent. P naught minus PS by P naught is equal to NS by N naught. Now then you know that NS is equal to weight of solute divided by gram molecular weight. इसको simply अपन A by M ऐसा लिख लेंगे, A by M. Next फिर उसके बाद में what is this N naught? N naught is weight of solvent over this is the gram molecular weight of the solvent. Okay, इसको अपन B by, this is the weight of solvent, B by W बोल के ऐसा लिख लेंगे. Now then इसको मैं इधर substitute कर ले रहा हूँ. P naught minus PS by P naught is equal to, in the place of NS I am writing A by M. This is related to the number of moles of solute. A weight of solute, molecular weight of solute. Now then by, क्या होता है भाई ये equation? N naught means what? B by W. Okay? तो थोड़ा इसको मैं simplify करा तो ये equation क्या बनने वाला है? देखिए I am writing it here. P naught minus PS by P naught is equal to A by M. ऐसे लिखना है आपको, into यहाँ पे क्या होगा, ये W by B बन गया. So this is the equation, final equation. So by using this equation we can calculate the molar mass. How molar mass of the solute is calculated? You know that this is the weight and this is the molecular weight. How molar mass of the solute is calculated with the help of the Raoult's law means we have to take this m beside this, इधर बाजू की m को ले लिए, तो then equation क्या बनने वाला है, A into W into P naught उस तरफ जाता. Now then यहाँ पे क्या लिखना, P naught minus PS into B. This is the formula to calculate the molecular weight of the solute based on this Raoult's law. How the Raoult's law is related, how the molecular weight is calculated with the Raoult's law, तो ये पूरा derivation करना है आप लोगों को. So this is about the Raoult's law. Now then the solutions which obeys Raoult's law
are called as ideal solutions बोल के बुलाते हैं, ideal solutions, ideal solutions. What is the meaning of that? Actually रॉल्ट लॉ के फॉर्मूला से अपन PS मालूम कर लिए, PS वैल्यू अगर आ गई कि 17.4 और 17.5 is the PS value which is calculated with the help of the Rolle's law. चलिए एक्सपेरिमेंट करके भी देख रहा हूं, मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूं तो भी वही वैल्यू आ रही, कैलकुलेटेड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वट एवर इट मे बी, रॉल्स लॉ की वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दो भी मैच हो रहे हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोल के बुलाते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं. कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज अगर सिमिलर है तो वैसे सॉल्यूशंस को रॉल्स लॉ को ओबे कर रहे हैं बोल के बुलाते, और वैसे सॉल्यूशंस को आइडियल सॉल्यूशंस बोल के भी बुलाते. नेक्स्ट थोड़े ऐसे सॉल्यूशंस है, सम सॉल्यूशंस आर देयर व्हिच डज नॉट ओबे द रॉल्स लॉ. मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इधर देखिए, आई एम राइटिंग दिस. पीएस वैल्यू रॉल्स लॉ से कैलकुलेट करा तो 17.4 mmHg आया था. Now then एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूं तो वैल्यू देखिए, थोड़े केसेस में 17.1 आ रहा, 17.0 या 16, इससे कम हो गया. और थोड़े सॉल्यूशंस में क्या होने वाला है? PS इज इक्वल टू एक्चुअल जो रॉल्ट लॉ से कैलकुलेट करे थे 17.4 थी, और एक्सपेरिमेंट करके देखा तो जो वैल्यू आ रही PS की वो 18 आ रही, इंक्रीज हो रही. ऐसे दो केसेस है. रॉल्ट लॉ से कैलकुलेट करे सो वैल्यू ज्यादा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर कम है तो ये फर्स्ट केस को क्या बोलते हैं बोले तो नेगेटिव डिविएशन बोल के बुलाते हैं, नेगेटिव डिविएशन. If the Raoult law value is less than the experimental value, that is the deviation is called as positive deviation. Solution which obeys the Raoult's law are called as ideal solution. Which does not obey the Raoult's law are called as real solutions or non-ideal solutions. So there is two types of deviation is present. There is two types of the deviation is there. First one is the negative deviation. Experimental value is less than the value which is calculated by the Raoult's law. That is the deviation is called as negative deviation. If the calculated value is more than the Raoult's law value, that is called as positive deviation. So this is about the definition of negative and positive deviation. Now then, what is positive deviation? Once again I am explaining, and 4 marks में भी पूछ लेता सेपरेट से पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशंस के बारे में लिखो बोल के. तो once again I am repeating, experimental value is more than that of the Raoult's law value. Such type of the deviation is called as positive deviation बोल के बुलाते. That is called as which deviation? Positive deviation from Raoult's law. Now then फिर उसके बाद ये पॉजिटिव डिविएशन क्यों होता? पॉजिटिव डिविएशन, सी दैट आई एम टेकिंग दिस कंटेनर, कंटेनर में मैं एक सॉल्वेंट को ले लिया, आई एम टेकिंग दिस सॉल्वेंट इन दिस, इसके मॉलिक्यूल्स को मैं ए ऐसा लिखते जा रहा हूँ. whenever the solute is added to this, थोड़ा सोल्यूट मैं मिला लिया, इधर सोल्यूट मिला लिए तो जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स है बी ऐसा लिख ले रहा हूँ मैं. अब इसमें डाल दिए तो क्या हुआ, और ए और बी दोनों के बीच में इंटरैक्शंस आ गए, थोड़े ए बी मॉलिक्यूल्स बन गए. सी हियर, इफ द इंटरैक्शंस बिटवीन द ए बी मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के बीच में इंटरैक्शंस अगर ज्यादा हो गए, if the interaction between these two molecules are more than the what A and B, pure solvent और solute molecule से B, A और B के interactions ज्यादा है तो evaporation कम होता, evaporation decreases. If the interactions are more, evaporation is decreases. If the evaporation is decreases, क्या होता बोले तो वेपर प्रेशर क्या होता बोले तो डिक्रीज होता, जिसकी वजह से नेगेटिव डिविएशन होता. जिसकी वजह से कौन सा डिविएशन होता? नेगेटिव डिविएशन होता. If the interactions between AB is more, then evaporation is less.
vapor pressure is decreases, that is called as negative deviation. In that case vapor pressure is decreases, that is called as negative deviation. Now then positive deviation कब होने वाला है? What is the positive deviation? Okay, what is the positive deviation? तर देखिए I am taking this container, इसके अंदर फिर वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ले लिए, उनके मॉलिक्यूल्स को भी ए बोल के लिख रहा हूँ. इन दैट मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सोल्यूट को डाल रहा हूँ मैं, मॉलिक्यूल्स को बी ऐसा लिख रहा हूँ मैं. व्हेन द सोल्यूट इज एडेड टू दी सॉल्वेंट, अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग्स आ गए, समझिए ए बी मॉलिक्यूल्स बने. इफ द इंटरैक्शंस बिटवीन दी ए बी बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज लेस, इंटरैक्शंस अगर कम हो गए तो एवापोरेशन इंक्रीज होता. एवापोरेशन इंक्रीज हो गया तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता. वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया तो क्या होने वाला है, we will get the positive deviation. This is about the positive deviation. So in the negative deviation, delta V of mixing is less than 0 and delta H of the mixing is less than 0. In this positive deviation, delta V of the mixing volume mix करने के बाद increase होता और enthalpy change during the mixing is also positive. This is about the positive and negative deviation. Now then यहाँ पे थोड़ा graphical representation अगर आप ले लिए तो देखिए एक ग्राफ है. तो इधर देखिए यहाँ पे वेपर प्रेशर ले रहा हूँ मैं Vp, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शंस ले रहा हूँ. XA की यहाँ पे मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0 ले लिया था और XB की मोल फ्रैक्शन 1 ले लिया था. यहाँ पे XA की यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे. XA की मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0 और XB की मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 1 ले लिया. नाउ देन देखिए इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन इंक्रीजेस, यहाँ पे क्या हो रहा बोले तो देखिए वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता. इसका अपोजिट साइड बोले तो इस तरीके से डाल लेना. देन नेगेटिव डिविएशन बोले तो देखिए वेपर प्रेशर जितना रहना था थोड़ा कम हो जा रहा है, ऐसा इतना. दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव डिविएशन. सो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इस तरीके से डाल ले रहा हूँ नेगेटिव डिविएशन. ओके, एसिड में वाटर मिला दिए, HCl प्लस वाटर, नेगेटिव डिविएशन होता. HNO3 प्लस वाटर, नेगेटिव डिविएशन होता. नेक्स्ट पॉजिटिव डिविएशन है, ये पॉजिटिव डिविएशन है. पॉजिटिव डिविएशन में ग्राफ किस तरीके का आने वाला है. ओके, आई एम ड्राइंग दिस ग्राफ वंस अगेन. देखिए ये ऐसी लाइन है मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर की. तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से आप ऐसा ड्रॉ कर लेना है आपको. सो इतना जो है ना इसको बोलते हैं डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन हुआ बोलते हैं. So this is about the graphs in the positive and negative deviation. Once again I am repeating this. If the calculated value, if the experimental value is more than that of the value which is calculated by the Rolle's law, that is called as positive deviation. In the positive deviation, interaction between the solute and solvent molecules are less than that of the solvent and solute molecules. Because due to this evaporation increases, therefore vapor pressure increases. In that case, delta V of mixing is more than 0, delta H of the mixing is more than 0, and you will get this type of the graph in the positive deviation. Now in the negative deviation, interaction between the solute and solvent molecules are more. If the interactions are more, vapor pressure value is decreases. This is called as the negative deviation. In the negative deviation, delta V of mixing is less than 0 and delta H of the mixing is less than 0. Now then you will get this type of the graph in the positive and negative deviations. After this, some problems are there in the Rolle's law. Rolle's law के थोड़े problems है, important problems है. I am explaining those problems. Vapor pressure of a water at 293 Kelvin is vapor pressure of water. Vapor pressure of water. Vapor pressure of water at 293 Kelvins is 17.5
535 millimeters of mercury Hg. Calculate the vapor pressure. Calculate the vapor pressure. Calculate the vapor pressure of a solution at 293 kelvins when 25 grams of 25 grams of 25 grams of glucose 25 grams of glucose is dissolved is dissolved is dissolved in 450 grams of water 450 grams of water. This is the question which is given in textbook. ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mm of Hg. Calculate the vapor pressure of a solution at 293 kelvins when 25 grams of glucose is dissolved in 450 grams of water. क्लियर से ये प्रॉब्लम अगर वेपर प्रेशर वगैरह दिख रहा तो आप ये रॉल्स लॉ का है, इसीलिए सिंपली रॉल्स लॉ का फॉर्मूला डाल लेना. P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन एस बाई एन नॉट. दिस इज द फॉर्मूला. नाउ देन फिर उसके बाद क्या कैलकुलेट करो बोल रहा, वो क्लियर से डाल लेना. पी एस वैल्यू कैलकुलेट करो बोल रहा, क्वेश्चन मार्क है. कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, ये पूछ रहा वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन PS. तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर P नॉट वैल्यू वो दिया. P नॉट वैल्यू, what is the P नॉट वैल्यू given? 17.535, that is given in your question. Now then with the help of this we can calculate the number of moles. NS is equal to, what is the value that is given? Solute कितने ग्राम्स है? 25 ग्राम्स. कौन सा कंपाउंड है? ग्लूकोज है. 25 by 180. okay, when you divide these two you will get the 0.13, that is the value. Now then what is the N naught? Number of moles of water, that is N naught is equal to, that is weight is given, that is 450 over, what is the molecular weight of the water? 18. Now then you will get this value 25. 1825 is 450. So this is about the N naught and NS values. Now then you substitute this N naught and NS values in this. Okay, once again I am writing P naught minus PS by P naught is equal to NS by N naught. चलिए next one, P naught minus PS by P naught is equal to, what is the NS value? 0.13. What is the N naught value that was calculated? That is 25. Now then इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? 1 minus PS by P naught बोल के लिख ले रहा हूँ मैं. सेम मतलब है P naught minus PS by P naught, that is equal to 0.13 by 25. ना देखिए इसको मैं थोड़ा इस तरीके से लिख रहा हूँ, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ मैं. 1 minus 0.13 by 25, इसको इधर ले लिया और फिर उसके बाद यहाँ पे PS by P नॉट डाल ले रहा हूँ मैं. फिर इससे थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लिया. 25 minus 0.13, 25 minus 0.13 by 25, that is equal to PS by P नॉट. इसमें से ये वैल्यू निकाल लो, आपको 24.97 समथिंग आता बाई. नेक्स्ट यहाँ पे 25 इज इक्वल टू PS by P नॉट
इसको मैं कट कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो यू विल गेट दी 0.99 और 98 आ रहा है पी एस बाई पी नॉट। नाउ देन फाइनल स्टेप, आपको पी नॉट पी एस कैलकुलेट करो बोल रहा, तो पी एस इज इक्वल टू 0.99 into what is the value given, that is the P naught value 17.535। 17.535 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 17.535 ही आता, 0.99 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट दी पी एस वैल्यू, दैट इज, इससे एक वैल्यू कम कर लो आप, 17.535 की जगह 17.4 डाल लीजिए। दिस इज योर वैल्यू, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। This is about the calculation of the vapor pressure with the help of the Rolle's law. I think you might understood this. ये समझ में आया होगा आप लोगों को। Now another important question. Calculate the mass of non-volatile solute. This is the another important question in the Rolle's law. Calculate the mass of a non-volatile solute whose molecular weight of that solute is given, that is 40, which should be dissolved in in 114 grams of octane, 114 grams of octane, to reduce the vapor pressure, to reduce its vapor pressure to 80%. This is the question. Calculate the mass of non-volatile solute whose molecular weight is 40, which should be dissolved in 114 grams of octane to reduce its vapor pressure to 80%. So this is also a problem based on the Rolle's law only. So I am writing this Rolle's law formula, molecular mass मालूम करो बोल रहा यहाँ पे, तो इसीलिए कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, मास मालूम करो बोल रहा, ए मालूम करो बोल रहा, तो सिंप्लीफाइड Rolle's law मैं ले रहा हूँ, मैं पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू, इससे पहले समझाया सो है ए बाई एम इंटू क्या लिए थे अपन, W बाई बी, ये इक्वेशन लेना है आपको, ये Rolle's law का फॉर्मूला लेना है। नो देन फिर इसमें सब्स्टिट्यूशन है, थोड़ा गौर करिए आप, देखिए यहाँ पे जो सेकंड है ना, ये क्या दे रहा, ऑक्टेन टू रेड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80, रेड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80 बोल के बोल रहा। इससे मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ मालूम है, 100 में से 80 निकाल लेना है आपको, बाय प्योर वाटर का, प्योर सॉल्वेंट का, कुछ भी रहने दो, पी नॉट वैल्यू यहाँ 100 लेना है। ये देखिए ये चीज से मैं ये निकाला, मैं टू रेड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80 से 100 माइनस 80, फिर 100 डाल लिया, तो ये पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट ही है वो। देन उसके बाद में देन क्या मालूम करो बोल रहा, ये मालूम करो, ए मालूम करो बोल रहा, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलाटाइल, you have to calculate the A with the help of this Rolle's law. Now then what is the molecular weight given, that is the molecular weight is 40 is given in your question. Now then at here into what is the molecular weight of the octane, octane का molecular weight 114 है, याद रखिए आप लोग, ओके। Now then फिर उसके बाद में इसका जो वेट दिया वो भी सेम दे दिया, 114 ग्राम्स दे दिया।
तो ये दो कैंसिल हो गए, 9 बच गया क्या है, 100 में से 80 निकाल लो, 20, वह 100 यहाँ पे डाल लीजिए आप, इज इक्वल टू A/40। देन ए क्या होगा भाई, A इज इक्वल टू 20 इंटू 40/100। सो दिस इज द वैल्यू। 0 0 कट हो गया और आपको क्या बचेगा, 8 ग्राम्स। यू विल गेट दिस आंसर, 8 ग्राम्स आता है। सो दिस इज अबाउट द कैलकुलेशन the molar mass of a non-volatile solute is how much gram, 8 grams. This is about the problems related to the Raoult's law. तो solution से मैं मोलारिटी के, मोलालिटी के, मोल फ्रैक्शन के और Raoult's law के प्रॉब्लम्स कराया मैं। नो देन फिर उसके बाद में छोटे VSAQs है। बिफोर गोइंग टू दैट थोड़ा व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये समझा ले रहा हूँ मैं। एग्जाम में वो भी पूछता व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेटेड का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा नहीं पूछ रहा एग्जाम में, तो मैं ऑस्मोसिस के बारे में समझा रहा हूँ। व्हाट इज ऑस्मोसिस, सी हियर, जैसा पानी ऊपर से नीचे तक आ रहा, ऊपर से अपवर्ड से डाउन तक जाता वाटर, वो फिनोमिना है। यहाँ पे भी होता, अमेरिका में भी होता, हर जगह होता। वैसी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड वाटर यानी साल्ट वाटर को एक जगह डाल लिया और अपना जनरल वाटर विदाउट साल्ट के वाटर को एक बाजू रख लिया। दोनों के बीच में मैं एक मेम्ब्रेन रखा। मैं मेम्ब्रेन क्या करता, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को एलो करता, इधर से उधर जाने देता, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को जाने नहीं देता। तो सॉल्वेंट दिस मेम्ब्रेन अलाउज दिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू फ्लो टुवर्ड्स दिस, इधर से उधर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते, मेम्ब्रेन से मूव होते रहते। तो जनरली अब जैसा पानी ऊपर से नीचे आ रहा, वैसी वाटर जो मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन को ट्रैवल करते थ्रू द मेम्ब्रेन। थोड़ी देर के बाद देख लिए तो जो जनरल वाटर है, मतलब जो अपना पानी है, उसका जो वॉल्यूम है कम हो जाता, और ये कॉन्सेंट्रेटेड वाटर जो लिया मैं, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता। यानी कि क्या हुआ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन के तरफ ट्रैवल हो रहे। सो दिस इज द प्रोसेस फ्लोइंग ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस बोल के बुलाते। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। नाउ देन मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के फ्लो को रोकना चाह रहा हूँ। तो सिंपल मेथड है, क्या करो भाई, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करो, प्रेशर अप्लाई करो। पिस्टन लगा के प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ मैं, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तो आहिस्ता 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 आना बंद हो गए। तो सर्टेन प्रेशर के पास भाई ये प्रेशर नोट कर रहा हूँ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर से इधर आना बंद हो गए। The pressure at which osmosis is stopped, the pressure at which flowing of the molecule from lower concentration to higher concentration is stopped, that is the pressure. Pressure required to prevent the flow of molecule from lower to higher concentration, pressure required to prevent the osmosis is called as osmotic pressure. उसको बुलाते क्या बोल के बुलाते, osmotic, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल के बुलाते। दिस इज द डेफिनेशन। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस को रोकना है भाई, इसके वास्ते कितना प्रेशर अप्लाई करना, दैट इज द प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ देन फिर इसके बाद में ये छोटा एक सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वाटर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसो मीन्स सेम, टॉनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी पाई वैल्यू सेम है वैसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते। द सॉल्यूशंस हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम एट द गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। व्हाट आर आइसो, iso means same, tonic means osmotic pressure, solution with same osmotic pressure are called as isotonic solutions. Further example for the isotonic, our blood, human blood is isotonic with the isotonic
That means these two are having same osmotic pressure values. Blood is isotonic with 0.9% weight by volume NaCl. नमक का पानी है NaCl. कितने ग्राम से Na को घुला लिए? 0.9 ग्राम. कितने ml में? 100 ml में. This is also called as, क्या बोल के बुला रहे हैं? Saline solution. Blood is isotonic with this saline. This is about the osmosis, osmotic pressure and isotonic solutions. Now अभी एक दो छोटे definitions से what is Henry's law एक है, what is the ebuloscopic constant है, cryoscopic constant, इसके बारे में समझा रहा हूँ मैं. Ebuloscopic constant, ebuloscopic constant. VSAQs है ये चैप्टर के solutions. I am explaining the important VSAQs and SAQs in the second chapter. Solutions के VSAQs. Last class में मैं आप लोगों को solid state के VSAQs और SAQs समझाया था. इससे पहले मैं आप लोगों को LAQs समझाया था. अब चैप्टर वाइज चल रहा हूँ मैं. तो ये second chapter है solutions का. In this second chapter I was explaining you about the molarity, then molality, then after that mole fraction, then after that Raoult's line problems, then what is the osmotic pressure, isotonic solutions के बारे में समझाया. Then about the ebuloscopic constant किसको बोलते हैं? ये VSAQ है. Ebuloscopic generally देखिए है कि आखिर ये देखिए, whenever the solute is added to the solvent, solute को मैं water को क्या कर रहा हूँ? थोड़ा नमक मिला दे रहा हूँ. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इससे पहले 100 था, समझिए. थोड़ा नमक मिला दिए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू इंक्रीज होता है 104, और मिला दिए 110, 108, लाइक दिस इंक्रीजेस. इसीलिए इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. दैट इज डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. Properties, those are depends upon what? Quantity of the matter. If the quantity is increases, that properties also increases. That is called as what is that? Colligative property बोल के बुलाते हैं. तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे ebuloscopic constant के पास. Before going to that, what is the increase in the boiling point? ये समझा रहा हूँ मैं. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 था, इसमें थोड़ा नमक डाल लिए तो बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू इंक्रीज होती. So it is called as elevation of boiling point. Increase in the boiling point is called as elevation of boiling point. Elevation of boiling point. Increase in the boiling point is called as elevation of boiling point. So elevation of boiling point in which solution? 1 मोलाल solution. एक मोलाल solution में boiling point value कितनी increase हुई? That is called as ebuloscopic constant. इसको एलिवेशन कांस्टेंट बोल के भी बुलाते, एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट बोल के भी बुलाते. नाउ नेक्स्ट वन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है. क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. व्हेन द सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीजेस. डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट इन 1 मोलाल सॉल्यूशन. 1 मोलाल सॉल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज हुआ? दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन कांस्टेंट बोल के बुलाते हैं. दीज आर द टू VSAQs which are important in this chapter. Now then another VSAQ है हेनरीज लॉ है. व्हाट इज हेनरीज लॉ? इसका स्टेटमेंट लिखो बोल के VSAQs में पूछ रहा. हेनरीज लॉ देखिए मैं फिर से ये समझा दे रहा हूँ. ये मेरे को वाटर ले लिया, वाटर में मेरे को गैस को स्टोर करना है ज्यादा, जैसा पेप्सी कोला में गैस रहती है, आप शेक करके छोड़ दिए उसमें से बबल्स निकलते, गैस निकलती, सेम लाइक दैट ओनली. मैं गैस को स्टोर करना चाह रहा हूँ तो सीधी सीधी बात है ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता. ये वाटर को थोड़ा ठंडा कर लेके ज्यादा प्रेशर को अप्लाई कर लिए तो ज्यादा गैस स्टोर होती बोल रहा. दैट इज कॉल्ड एज हेनरीज लॉ. द अमाउंट ऑफ द गैस is dissolved in this liquid is directly proportional to the what? Pressure over the surface of this liquid. क्या बोल रहा हूं मैं? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं. The amount of gas that can be dissolved in this solvent is directly proportional to what? Pressure of the gas, pressure of the gas present over the water. Now then this pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of the solute present in that gas. That is called as Henry's law.
What is Henry's law? Solubility of the gas in the liquid is directly proportional to the pressure of the gas present over the liquid. Then this pressure of the gas is directly proportional to what? Mole fraction of the solute present in that gas. That is the definition is called as Henry's law. This is about the चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस का चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमने. जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको रिवाइज कर लिया. मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, रॉल्स लॉ के प्रॉब्लम्स के साथ में, वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ, पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन और प्रॉब्लम्स. वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलते हैं, एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. ऑल दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हो. Now then after that क्वेश्चन नंबर 11 हो गया और क्वेश्चन नंबर 12 हो गया. क्वेश्चन नंबर 13 ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ सकता या नहीं तो सरफेस केमिस्ट्री से आ सकता. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा पढ़ लिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ आज सरफेस केमिस्ट्री ले रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 13 में सरफेस केमिस्ट्री आपका 4th चैप्टर है. सरफेस केमिस्ट्री के बारे में समझा रहा हूँ. सरफेस केमिस्ट्री. इसमें से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ओके, इन द क्वेश्चन नंबर 13 ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछ रहा हो 13 या 14 में आता, फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन. राइट द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन. क्लास होने के बाद राइट द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन. आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन, what is catalysis? What is catalysis? Write its types. Another question, what are colloidal solutions? Colloidal solutions. Write about lyophilic and lyophobic solutions. Lyophilic and lyophobic solutions. After this another is also there, what are emulsions? How these are classified. Now then another is also there, what is micelle? Cleaning action or formation of micelle. Cleansing action बोल के भी बुलाते हैं. So these are the some important questions in the surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री से फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन के डिफरेंसेस पूछ रहा, नहीं तो व्हाट इज कैटालाइसिस, राइट इट्स टाइप्स. अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट अबाउट द राइट सम एग्जांपल्स. और उसके बाद में राइट द डिफरेंसेस बिटवीन लियोफिलिक एंड लियोफोबिक सॉल्ट्स. कोलाइडल सॉल्यूशंस को सॉल्ट्स बोल के भी बुलाते. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इमल्शंस, राइट इट टाइप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माइसिल, राइट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ माइसिल, ने तो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप. इसके बारे में पूछ रहा. वी विल सी वन बाय वन, एक के बाद एक आंसर कंप्लीट कर लेंगे आज. एस सरफेस केमिस्ट्री में व्हाट इज द सरफेस एरिया, इसके बारे में थोड़ा मालूम करना है. सरफेस एरिया, आउटर मोस्ट अपर लेयर अबाउट द 100 नैनोमीटर थिकनेस. 100 नैनोमीटर थिकनेस अपर मोस्ट लेयर को क्या बोलते बोले तो सरफेस एरिया बोलते. तो सरफेस केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द फिनोमेना विच इज टेकिंग ऑन द सरफेस एरिया.
दैट इज द डेफिनेशन। सी दैट यहाँ पे आपको दो डेफिनेशंस पहले मिलते हैं, व्हाट इज द अब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन मीन्स क्या है, एडजॉर्प्शन क्या है, थोड़ा डेफिनेशंस पढ़ना है आपको। अब्जॉर्प्शन देखिए, मैं एक चाकू ले लिया, चाकू ले लेके इंक में डाल दे रहा हूं मैं, तो इंक के मॉलिक्यूल्स या वाटर के मॉलिक्यूल्स चाक के अंदर बाहर सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते, चाक जो है गीली हो जाती, कच्ची हो जाती, यानी कि मॉलिक्यूल्स उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर और बाहर सब ऑक्यूपाई हो रहा, तो दैट इज क्या बोल के बुलाते हैं आपको, अब्जॉर्प्शन बोल के बुलाते हैं, अब्जॉर्प्शन। ओके, concentration of the one substance on the surface and also into the substance, that is called as absorption process. Now then another one is there, what is adsorption? Adsorption, concentration of the one substance only on the surface। जैसा अपन पेंट कर रहे हैं दीवार को, तो पेंट ऊपर ही रह जा रहा, अंदर नहीं जा रहा, वो खाली सरफेस पे जम रहा, तो उसको क्या बोलते बोले तो एडजॉर्प्शन बोलते। अंदर भी चले जा रहा तो उसको बोलते एब्जॉर्प्शन बोलते। वाटर मॉलिक्यूल स्पंज में अब्जॉर्ब हो गए। और यहाँ पे एडजॉर्प्शन का मतलब ये निकल को लिया, इसके ऊपर आपको हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो रही, यानी व्हाट इज द एडजॉर्प्शन, कंसंट्रेशन ऑफ द वन सब्सटेंस ओनली ऑन द सरफेस बट नॉट इनटू द सब्सटेंस, अंदर नहीं जा रहा, खाली सरफेस एरिया में आके ऑक्यूपाई हो रहा, दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन प्रोसेस। यहाँ पे एक टर्म समझा रहा हूं मैं आपको, जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा उसको बोलते एडजॉर्बेंट बोल के बुलाते। ऑन हुज सरफेस एडजॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज एडजॉर्बेंट। जो सब्सटेंस आके एडजॉर्ब हो रहा, सब्सटेंस which is concentrated, which get concentrated on the surface of the another one, that is called as adsorbate, adsorbate बोल के बुलाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन और बाकी की चीज़ कंटिन्यू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।